how perceptron learning rule, how many steps are there when you want to train a particular perceptron? What is the perceptron? Then its architecture, its flow chart, training algorithm, testing algorithm is there for a perceptron. And then we'll go for a back propagation model, and there are various factors that is present in back propagation model, and with an overview of time delay, function link, and tree neural network. And we'll see what is difference between back propagation and RBF network, that is reverse back propagation network. So major topics that we are going to cover is about the supervised learning network and their associated single and multi-layer feed-forward network. ठीक है, single multi-layer feed-forward network. These two networks are important in developing a perceptron. So what is a perceptron? Perceptron in case of a neural network. I'll just share the PPT. Just a minute, I'll just share. So, in this module, the perceptron network will see adaptive linear neuron and back propagation network we are going to see. Now, basically, what is perceptron? So, perceptron is a neural network unit. A single unit is there that does contain some computation to detect features or some intelligence in the input data. So it is used, this perceptron is used to detect any features that is included in a data. Suppose I am using a speech recognition data. ठीक है, एक speech या फिर audio visual data I'm feeding to the particular model. So what this perceptron will do, will extract the feature. अब audio feature में आप क्या extract कर सकते हो? ऑडियो डेटा में आप क्या फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? ऑडियो में यू कैन एक्सट्रैक्ट at what is the duration of the speech, whether that particular speech is an emotional speech, whether the speech is happy speech, or you can detect means basically you will detect the emotional as SCR model. तो इमोशन में हमारे पास 5 टाइप के इमोशंस, बेसिक इमोशंस आर देयर. सपोज हैप्पी है, सैड है, एंग्री इमोशन इज देयर, देन फियर इमोशन और neutral emotion. Okay, so these 5 basic features will be extracted by the perceptron. Whether the particular speech is angry speech, depending upon the time and amplitude and frequency of that particular speech, then the pitch will be detected, that is PITCH, pitch. Okay, pitch of that particular speech will be detected. And then there are different, whether it is a voiced speech, unvoiced speech, or there is a silence in that particular data. तो ये सब फीचर्स कौन एक्सट्रैक्ट करेगा? दैट इज योर परसेप्ट्रॉन. ठीक है. So I have told you about a speech recognition model, but in case of image recognition model, which features you will extract? बेसिक फीचर, कोई भी एक फीचर बता दो इमेज रिकग्निशन में.
अगर मैं एक इमेज फेड करती हूँ, साइज ऑफ इमेज, color, नहीं, फीचर नहीं है, साइज इज नॉट अ फीचर। एक सपोज एक इमेज फेड करती हूँ, इट कैन बी ऑफ एनी साइज, ओके, तो वो साइज इज नॉट अ फीचर, बट व्हाट आई वांट अ बेसिक फीचर ऑफ इमेज. Suppose Color. I want to detect whether the color of image is blue, green, red, whatever color is that, that feature I want to extract. ठीक है, the shape of that particular image, or you can say सपोज एक पर्सन का इमेज है, मुझे एक पर्सन को डिटेक्ट करना है, सो विच फीचर आई विल एक्सट्रैक्ट द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, द आईज, स्माइल, हेयर, whatever style of hair he or she is having. So this is known as a feature. Size is not a feature. ठीक है, जैसे मैंने स्पीच में बताया, इमोशनल कंटेंट ऑफ द डेटा यू कैन एक्सट्रैक्ट. ओके, आप क्या करोगे, डेटा कोई भी साइज का हो, बट उसके अंदर के फीचर्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है. सो दैट विल बी डन बाय द परसेप्ट्रॉन. This is generally used, the perceptron are generally used in deep learning model. So in this perceptron, it can be under architecture of single layer feed forward network, and this is also called as simple perceptron. अब इसमें मल्टी लेयर उसने ऐड नहीं किया है. इफ यू वांट टू बिल्ड अ सिंपल perceptron, you can write a code for a perceptron in Python also. So if you want to build a particular simple perceptron, then go for the architecture of single layer feed forward network. So there are different types of perceptron that were designed by Rosenwald in 1962 and Minsky Papert in 1969 and 1988. So these two researchers have developed the various type of perceptron used. So there are the key points that is to be noted in a perceptron network. If you want to build a particular perceptron network, तो ये सारे key points आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. Okay, so what are the key points? The first one, the perceptron network consists of 3 units, namely sensory unit, input unit that is known as associator unit, hidden unit and a response unit that is a output unit. ठीक है, तो हमारे पास वो न्यूरॉन वाला मॉडल याद करो. तो इस सिंगल लेयर में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इनपुट नेटवर्क, आउटपुट नेटवर्क एंड सम हिडन लेयर. तो ये परसेप्ट्रॉन ने उसके नाम क्या दिए हैं, इट्स अ सेंसरी यूनिट मतलब इनपुट यूनिट, then associated unit between input and output, it's a hidden unit, and a response unit, that is the output unit. Then the sensory unit are connected to the associated unit with its fixed weight having the values of 1, 0 or -1. So what it is saying, the sensory unit, matlab the input unit is connected to the associated unit, मतलब वो hidden layer से connected है. तो hidden layer से अगर वो connect होता है, it will have a fixed value of 1, 0 or -1, which are assigned at random. तो input unit to associate unit जब वो connection करता है, it will be assigned a weights, or you can say a fixed value of that weight is what, 1, 0 and -1. It is fixed, which is assigned at a random. तो ये weights क्या होते हैं, जो connection between hidden layer and input layer है, वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, weights लगाते हैं, right?
तो वो वेट्स की वैल्यू इसमें फिक्स है, इट कैन बी 1 0 और -1 एंड एट रैंडम इट इज असाइंड. So the binary activation function is used in sensory unit and associated unit. So आपके binary activation function जो है, it is used for sensory unit and associated unit. So while developing a perceptron, ये चीज ध्यान में रखना, you have to use a binary activation function. अब ये एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग क्यों लगाते हैं? टू फायर दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन or to activate that particular neuron, we use the activation function. अब यहाँ पे perceptron के लिए single perceptron और simple perceptron के लिए you need a binary activation function. Then the response unit of a binary activation function is 1, 0 or -1. The binary step with fixed threshold of theta is used as an activation for associator. ठीक है, बाइनरी स्टेप फंक्शन इज यूज्ड विद द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ थीटा. हम लोग ने देखा था इफ इट इज ग्रेटर देन थीटा, एक्स इज ग्रेटर देन थीटा, then it can be 1, 0 or -1. Then the output signal that are sent from the associator unit to the response unit are only binary. ठीक है, अब ये क्या है? आउटपुट सिग्नल हम लोग कहाँ से भेजते हैं? फ्रॉम द एसोसिएटेड यूनिट और द हिडन लेयर. सो हिडन लेयर से आउटपुट सिग्नल तक जाने तक दैट विल हैव ओनली द बाइनरी वैल्यू. ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल क्या प्रोड्यूस करेगा? द रिस्पॉन्स यूनिट विल प्रोड्यूस ओनली द बाइनरी सिग्नल्स. Then the perceptron learning rule is used in weight updation between the associated unit and the response unit. Now the perceptron learning rule. So learning rule हमने देखा, it can be supervised, unsupervised or reinforcement learning. लेकिन generally perceptron uses supervised learning algorithm. ठीक है, तो we'll use some of the learning rule to update the weight. अब हम लोग वेट अपडेशन क्यों करते हैं? सो दैट आवर आउटपुट और एक्यूरेसी विल बी मोर. एकदम 100% नहीं आएगा, बट इट शुड बी समवॉट सिमिलर और मोर देन द इनपुट डेटा. सो देयर शुड बी अ ट्रेनिंग डेटा एंड अ टेस्टिंग डेटा. ठीक है, ट्रेनिंग डेटा क्या करेगा? वो खुद ब खुद ट्रेन करेगा खुद को एंड आउटपुट विल बी गिवन. एंड टेस्टिंग डेटा क्या करेगा? जब वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रेडी कर लेगा कि अगर सर्कल है तो इट विल बी एन एप्पल एंड लाइक दिस. इफ दैट फॉर्मूला इज रेडी, विल प्रोवाइड द टेस्टिंग डेटा एंड उसके थ्रू हमको क्या मिलेगी? एक्यूरेसी मिलेगी कि हमारा जो भी मॉडल अभी हमने बनाया है that is accurate. Suppose उसकी accuracy is 80%. तो इस accuracy को कैसे improve कर सकते हैं? by providing some of the inputs or by changing our network or by changing the learning rule. So you can increase the particular accuracy by weight updation or changing the network or changing the learning rule. So this is done when the perceptron learning rule is used in the weight updation between the associated unit and the response unit. Then for each training input, the net will calculate the response and it will determine whether or not an error has occurred. ठीक है, तो एरर कब मिलेगा? जब हमारी एक्यूरेसी बहुत कम है, तो मतलब देयर इज एन एरर. सो वी नीड सम ऑफ द फीडबैक गिवन टू द इनपुट साइड कि दिस इज इट इज गिविंग एन एरर कि हम लोग अगर डेटा एप्पल का फीड करें, इट इज गिविंग आउटपुट एज बनाना. सो वी सी कि what is input, what should be the output. So each training input
the net output will be calculated and the response will determine whether or not an error has occurred. So the error calculation is based on the comparison of the value of target with those of the calculated output. ठीक है, तो हम लोग इसके लिए confusion matrix डिजाइन करते हैं. तो अभी कंफ्यूज मत हो कि व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, हमने confusion matrix will only give you the error messages या error calculation. तो एक मैट्रिक्स टाइप का रहता है, वो आपके सिलेबस में है या नहीं I have not seen, but a confusion matrix is important. So what this confusion matrix is will give you, it's if an actual apple is fed as a data and output is also an apple, means what? Both are yes, that is actual input and actual output is same. Then the matrix will give there is no error. अगर हम actual apple feed करते हैं and output it will give you a banana, means there is an error. So confusion matrix will only calculate the error. Then the weights on the connection between the units that are sent to the non-zero signal will only adjusted suitably. So the weights on the connection, अगर error होगा तो आप weights को update कर सकते हो. ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में भी वही लिखा है. द वेट्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग रूल इफ एन एरर अकर्ड फॉर द पर्टिकुलर ट्रेनिंग पैटर्न. ठीक है, तो हम लोग कैसे अपडेट करते हैं? WI new is equals to WI old plus alpha TXI. So what is the value of T? T is the target value. It can be either +1 or -1 and alpha is the learning rate. ठीक है, तो ये सब हमारे एल्गोरिदम में हमको अपडेट करना पड़ता है. व्हाट शुड बी द लर्निंग रेट? अगर आप बहुत ज्यादा लर्निंग रेट देते हो देन एक्यूरेसी विल समवॉट बी लेसर, क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिलता है लर्न करने के लिए. थोड़ा बहुत टाइम अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा दोगे द लर्निंग रेट विल बी इंक्रीजिंग. लर्निंग रेट मतलब उसका जो पावर है, कैपेसिटी है कि नॉलेज शुड बी स्टोर्ड, दैट विल बी इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द ड्यूरेशन. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन अपडेट द वेट्स एंड द बायस. So in general, these rules, learning rule begin with the initial guess at the weights value. So this we have done कि हमने guess किया कि assume किया कि हमारे weights 1 1 होने चाहिए. Then हमने output देखा कि this should not be the output. Then again what we have done, we have updated the weight and finally हमारे outputs मिल गए. So generally, the rules are only based on the updation of weights and bias. ठीक है, तो हमको ये ट्रायल एंड एरर करते रहना चाहिए so that our accuracy will be improved. So the output of perceptron network is given by y equals to f of yn, and f of yn is in between 1 0 and -1. 1 is when the net input when the net output is greater than theta. Yn is in between minus theta to theta, you will get the output as 0. And if in yn is less than minus theta, you will get a -1. Okay, any doubt in this? It's an introduction to perceptron. Tomorrow we'll see an architecture of perceptron, the how the original perceptron network looked like. And tomorrow also we'll see how we can develop a single neural network. Okay, एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे how to develop a simple neural network.
I'll take attendance. Just a minute, wait. Okay. Roll number one. One.